Assalamu alaikum. My name is Kiran Aamir and I am Director Operations at PARSA Eco Pakistan, Superhub. I would like to welcome you all to our new series, Eco series on inflammatory bowel disease. It's in collaboration with South Asian IBD Alliance, SAIA, a charitable organization in United States with the global presence in South Asia, India, Pakistan, etc. A special thank to Genix Pharma for the unrestricted educational grant. Today's session is titled Inflammatory Bowel Disease and Overview, and our expert for tonight's session is Dr. Shanil Kadir. Before I introduce you to our expert for tonight's session, we have to go through some standard announcements. We are part of a global movement called Project ECHO based in USA with an objective to disseminate knowledge and best practices. We do protect patient privacy, so none of the information used in this session will identify any individual or patient. For maintaining discipline, you all are muted, but we do encourage participation. So you can unmute yourself for questions or use the raise hand option or chat box. By participating, you have given the consent for recording. The recorded session will be available on our YouTube channel. Link will be shared in the chat box. For CME credits, please contact Uzair, our coordinator. His number is mentioned on the banner. CME credits are affiliated with Jinnah Sindh Medical University. Uzair will share the Google form at the end of the session, which will be active for 12 hours. You are requested to fill it as soon as possible to avail the opportunity of CMEs. For the convenience of folks, the session is bilingual. Please speak in Urdu and English, whatever language you are comfortable in. Our expert for tonight's session is Dr. Shanil Kadir, a UK-trained gastroenterologist and hepatologist. Dr. Kadir returned to Pakistan after working in UK for 15 years. Dr. Kadir has published clinical articles in many international journals and has presented his work at international conferences. He's working as consultant gastroenterologist in Liaquat National Hospital, Karachi. I will hand over to Dr. Kadir. Okay, thank you to Project ECHO and SAIA for inviting me for this talk. Those of you who are joining us again, you may have heard this talk before. हमने जब inflammatory bowel disease day हुआ था, तो उस वक्त भी यही talk किया था. But because we are starting a new ECHO program with inflammatory bowel disease, so we thought कि we'll do an overview again just to recall things, and then every monthly, as Kiran has mentioned, we'll be running session on inflammatory bowel disease and different topics on it. So today's talk, as I said, start of collaboration between SAIA and PARSA Trust ECHO Group. It's tailored to the GP. I know there are a few gastroenterologists as well, I can see, but most of this talk is tailored towards the GP. It's going to be regular Zoom session, as Kiran has mentioned, and you get CME certificates and sort of interactive discussion. तो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज पहले जाते हैं कि व्हाट इज इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज एक मेडिकल टर्म होती है एक सिंपल सी टर्म होती है मेडिकल टर्म इन्फ्लेमेटरी bowel disease is divided into two parts: Crohn's disease and ulcerative colitis. It's an immune mediated chronic inflammatory disorder. That's the very important bit here जो हम लोग इतना ज़्यादा उस पे ध्यान नहीं देते कि it's a chronic inflammatory disorder. बहुत दफ़ा आपने बायोप्सी रिपोर्ट में देखा होगा acute inflammation आती है. So this is a chronic inflammatory disorder which is progressing and disabling, obviously, if it's not treated. Predominantly usually affects younger population, young patients में बहुत ज़्यादा होता है, and it has a significant impact on the quality of life and high financial burden, जो कि हम आगे आपसे डिस्कस करेंगे कि medications और patients surgery की ज़रूरत होती है या कोलोस्टोमी इलियोस्टोमी की ज़रूरत होती है, तो obviously significant impact उनकी quality of life पे पड़ता है. Simpler definition इसकी inflammatory bowel disease की कि it's a group of intestinal disorders that cause prolonged inflammation of the digestive tract, and it's, as I said, divided into ulcerative colitis and Crohn's disease. पहले ulcerative colitis को ले लेते हैं, उसके बाद Crohn's disease के ऊपर बात करेंगे. Ulcerative colitis again chronic inflammatory disease जिसमें mucosal inflammation होती है, starting from the rectum and proximally. It can involve the whole colon, or it can be rectum and sigmoid and then on the right side, but usually जो है वो colon में ही होती है. It doesn't go into the small bowel.
It's often with abrupt demarcation, inflamed or non-inflamed mucosa में demarcation होती है, जैसे जब हम colonoscopy करते हैं, usually limited to large bowel, and the inflammation occurs only in the innermost lining. The superficial innermost lining जो mucosal lining होती है, उसमें inflammation होती है. Compared to Crohn's disease, जो कि किसी भी part of GI tract को affect कर सकती है, upper GI tract को भी affect कर सकती है, small bowel को भी affect कर सकती है, कोलोन को भी अफेक्ट कर सकती है. इसमें इन्फ्लेमेशन ट्रांसम्यूरल होती है. जैसे पिछले वाले में अल्सरेटिव कोलाइटिस में इन्फ्लेमेशन सिर्फ सुपरफिशियल थी, इसमें जो है वो बिल्कुल डीप थ्रू आउट द थिकनेस ऑफ द बाउल इन्फ्लेमेशन होती है. इसीलिए जैसे कभी आपने देखा होगा क्रोन्स डिजीज में पेशेंट्स बहुत सारे को फिस्टुला हो जाता है, फिस्टुलेटिंग डिजीज हो जाती है, तो दैट्स बिकॉज ऑफ द ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन. Appears in patches and obviously involves ileum, terminal ileum, distal ileum, and actually can involve any part of the GI tract. This diagram just highlights जो मैं अभी कह रहा था कि healthy colon है, उसमें फिर Crohn's disease में जैसा आपने देखा कि ये transmural inflammation हो रही है, fissuring हो रही है, और ulcerative colitis में सिर्फ ulceration within the mucosa है. And again, you know, Crohn's disease can affect any part of the GI tract, transmural discontinuation patches, discontinuous patchy inflammation, और ulcerative colitis सिर्फ large intestine को affect करती है usually. Causes, there are plenty of reasons के inflammatory bowel disease के. Usually you can divide it in genetic causes, family history होती है, environmental causes, smoking वगैरह, इसके अलावा immune response, intestinal barrier. So you can divide it into all these four different columns, जिससे आपको which predisposes you to inflammatory bowel disease. There is no particular thing के ये है तो फिर inflammatory bowel disease होगी. It's all combination of all these reasons why a patient can develop inflammatory bowel disease. Obviously, one of the things which we can help with the patient is stopping smoking. Incidence पहले इतना ज़्यादा incidence नहीं था इसका पाकिस्तान में. I'm sure कि जो हमारे GP colleagues और दूसरे gastroenterologist हैं वो बताएंगे कि अब जो है वो इसका incidence हम clinic में ज़्यादा से ज़्यादा देख रहे हैं. पेशेंट्स प्रेजेंट कर रहे हैं इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज के साथ या उनके सिम्टम्स के साथ. तो अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो ये पाकिस्तान के इंसिडेंट्स इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास कोई लोकल डेटा अवेलेबल नहीं है. तो दिस इज़ ऑल इंटरनेशनल स्टडीज, नो लोकल डेटा. सो पीडियाट्रिक इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज increasingly common around the world. ये स्टडी हुई थी रिसेंटली गैस्ट्रोएंटरोलॉजी जर्नल में, जिसमें 7 out of 7 स्टडीज रिपोर्टेड इंक्रीज प्रेवलेंस. तो बच्चों में जो है वो ज़्यादा हो रही है, वेदर इट्स बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स कि हमारा एनवायरमेंटल फैक्टर्स ऐसे हो गए हैं या हमारी डाइट ऐसी हो गई है. तो ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं या जेनेटिक फैक्टर्स हैं, लेकिन ऑब्वियसली पीडियाट्रिक इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज इज इंक्रीजिंग. इंसिडेंट इन साउथ एशिया, एक 2020 में स्टडी हुई थी जिसमें उन्होंने इंडिया और फार ईस्ट में इंसिडेंस इसका इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज का देखा था. तो एज यू कैन सी के 2012 to 2013 में भी इंसिडेंस इन इंडिया और बाकी कंट्रीज में इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज का ज़्यादा है. अगेन देयर इज नो डेटा ऑफ पाकिस्तान, तो हमें नहीं पता कि हमारा इंसिडेंस कितना है, बट अगर 2013 में उस वक्त इंसिडेंस इतना था तो ऑब्वियसली अब जो है वो इट्स बाउंड टू बी इंक्रीज्ड. एक अनदर स्टडी विच वाज डन इन ईरान, उसमें उन्होंने इलनेस और डेथ मॉडल से प्रिडिक्ट किया था कि कितनी फोल्ड राइज होगी इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज में इन डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स और डिफरेंट एरियाज. तो एज कंपेयर टू 2020 इन 2035 2.5 फोल्ड इंक्रीज इन ईरान में होगा, 2.3 फोल्ड इंक्रीज इन नॉर्थ अफ्रीका एंड मिडिल ईस्ट में होगा, क्वाड्रिपलिंग इंडिया में होगी, and 1.5 and 1.6 fold increase in Asia Pacific and Eastern Asian region. तो आप देखें कि अगर जो है वो ईरान, इंडिया और नॉर्थ अफ्रीका, मिडिल ईस्ट में 2.3 फोल्ड इंक्रीज हो रहा है और फार ईस्ट में 1.6, तो पाकिस्तान में भी ऑब्वियसली इसी अंदाज से जो है वो इंसिडेंस इसका बढ़ेगा. What about epidemiology? Usually occurs at the age of between 15 to 30, can happen in older age as well. There is a second peak between 60 to 80 years old. Ulcerative colitis में is usually 1-to-1 ratio between male and female.
Crohn's disease इसमें there is 1.1 to 1.8 ratio. As I said earlier कि smoking जो है वो इसको increases your risk, and if you have a first degree relative your risk also increases. Overall worldwide prevalence, थोड़ा सा Crohn's और अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में सिम्टम्स में देख लेते हैं कि उसमें क्या होता है. तो Crohn's disease में it's not just related to the bowel. People can present with non-bowel symptoms as well. कि उनको आई इन्फ्लेमेशन हो गई, स्टोमेटाइटिस हो गया, रिकरेंट माउथ अल्सर्स हो गए. ऑब्वियसली इंटेस्टाइनल सिम्टम्स तो वही डायरिया, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्पिंग वगैरह होता है, रेक्टल ब्लीडिंग होता है, जॉइंट पेन्स के साथ आते हैं, वेट लॉस होता है, डिक्रीज एपेटाइट होती है. तो सिर्फ और सिर्फ बावल सिम्टम्स नहीं होते, बहुत सारे लोगों को प्रेजेंट ही नॉन बावल सिम्टम्स से सिम्टम्स शुरू होते हैं और उसके बाद फिर जाके उनको बावल सिम्टम्स डेवलप होते हैं. तो ये इम्पॉर्टेंट है जो हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं, कि वो ये इसको जहन में रखें जब वो इस तरह के पेशेंट्स देख रहे हों. अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी मोरलेस उसी तरह के सिम्टम्स होते हैं, ब्लडी स्टूल, डायरिया, रेक्टल पेन, एब्डोमिनल पेन, इंक्रीज अर्जेंसी, कांस्टेंट अर्जेंसी टू डेफिकेट, डेफिशिएंसी होती है. इसके अलावा जॉइंट पेन और आई पेन जो Crohn's डिजीज में होता है उसी तरह अल्सरेटिव कोलाइटिस में होता है. तो इस बेसिकली मल्टी सिस्टमिक सिम्टम्स हो सकते हैं, मोस्टली यूजुअली प्रेजेंट विद द जीआई सिम्टम्स. सीलिएक डिजीज वगैरह, हमारे यहाँ टीबी बहुत ज़्यादा होती है तो टीबी को रूल आउट करना. इसके अलावा IBS, लैक्टोज इंटॉलरेंस, मैलिग्नेंसी. तो ऑब्वियसली दिस differential will be based on the history and the initial investigation that you do. स्टूल DR और CS मोस्टली देखा ये जाता है कि पेशेंट्स को क्रॉनिक डायरिया हो रहा है लेकिन कभी स्टूल DR या CS भेजा नहीं गया. तो एक ही चीज़ ये इम्पॉर्टेंट है कि आप स्टूल DR और CS ज़रूर भेजाएं, बिकॉज दिस इज़ अ पार्ट ऑफ रूटीन इन्वेस्टिगेशन एंड यू आर रूलिंग आउट द अदर कॉजेज. तो एक स्टूल सैंपल भेजने में जो है वो पेशेंट्स को इतना कोई मसला यूजुअली होता नहीं है. तो बेहतर है कि स्टूल DR और CS से आपने अपने इन्फेक्टिव कॉजेज रूल आउट कर लिए. प्लीज़ डोंट सेंड स्टूल फॉर H. pylori, क्योंकि इसका कोई H. pylori से ताल्लुक नहीं है. हमारे पास कुछ ये मेरे ख्याल से पैटर्न है कि एवरीबडी गेट्स अ स्टूल फॉर H. pylori टेस्ट. तो stop doing stool for H. pylori test for everybody unless obviously they are symptomatic. तो इसमें कोई इसकी नीड नहीं होती. And you can do fecal calprotectin. It's not available everywhere, but if you think based on the history that it does look like inflammatory bowel disease, so there is no harm sending a fecal calprotectin. The important point in this slide which is I've highlighted is please refer the patients to specialist, especially जो हमारे GP हैं और health care professionals हैं non gastro के. If you see anybody you think कि यार इसको जो है वो हो सकता है inflammatory bowel disease के symptoms लग रहे हैं, तो don't sit on the patient, just refer the patients to the specialist, because we want them to be seen early and picked up early rather than जब उनकी बिल्कुल severe disease हो और वो surgery या उसके लिए जा रहे हो. और क्या इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं? वी कैन गेट एन इरेक्ट एब्डोमिनल एक्सरे इफ यू आर सस्पेक्टिंग अ टॉक्सिक मेगाकोलोन. बैरियम स्टडीज कभी कभी हेल्प करती हैं, स्मॉल बावल, स्पेशली स्मॉल बावल में CT और MR ऑब्वियसली इज बेटर देन बैरियम स्टडीज. बाहर मुल्कों में कुछ कंट्रीज में अब इंक्रीजिंग ट्रेंड हो गया है कि वो अल्ट्रासाउंड में भी इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज को कंफर्म करते हैं. ऑब्वियसली उनकी थोड़ी सी जो एक्सपीरियंस है इसका वो ज़्यादा है, हमारे पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है. तो आई थिंक वी विल स्किप विद द अल्ट्रासाउंड, वी जस्ट गो विद द CT स्कैन, और कोलोनोस्कोपी, सिग्मोइडोस्कोपी इज ऑब्वियसली द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर डायग्नोसिंग इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज. ये स्लाइड मैंने बस आपको दिखाने के लिए रखी है कि जब हम आपने अगर आप हमारी गैस्ट्रो की रिपोर्ट वगैरह देखें तो हम कहते हैं कि जी पैनकोलाइटिस, तो पैनकोलाइटिस मींस द होल कोलॉन इज इन्वॉल्व. अगर हम कहते हैं जी रेक्टोसिग्मोइडाइटिस तो दैट मींस कि ये रेक्टम और सिग्मोइड वाला जो हिस्सा है ये वाला यहाँ तक जो है वो इन्वॉल्व होगा. तो ये 15-20 सेंटीमीटर्स ये इन्वॉल्व होगा लेफ्ट साइडेड. तो इसीलिए कभी कभी अगर आपने देखा हो तो अगर प्रोक्टोसिग्मोइडाइटिस है या प्रोक्टाइटिस है तो पेशेंट को एनेमा लगाया जाता है क्योंकि वी वांट टू हील दिस एरिया. तो एनेमा यहाँ तक जा सकता है. तो दिस इज जस्ट फॉर
जब आपकी कोलोनोस्कोपी रिपोर्ट हो तो उसमें जो है वो आप फिगर आउट कर सकें। एक चीज़ हमारे यहाँ आती है टीबी के, इंटेस्टाइनल टीबी तो नहीं है। टीबी यूजुअली क्रोन्स डिजीज़ के साथ मोरलेस थोड़ा सा उसके सिम्टम्स एक तरह के होते हैं। दिस इज़ अ वेरी गुड स्लाइड बाय डॉक्टर विशाल शर्मा, ही डिड अ वेरी excellent talk on Monday night IBD, अगर कोई ट्विटर पे है तो this is very good for IBD, and just shows you difference between in histology between the intestinal tuberculosis and Crohn's disease. तो granulomas जो हैं वो इसमें more frequent होते हैं, lymph node involvement can occur in lymph node without intestinal involvement, usually caseating होते हैं, all layers involved होती हैं, fissuring uncommon होती है। So it's histologically you can differentiate between Crohn's disease and intestinal tuberculosis. Obviously sometimes it's difficult, कभी-कभी difficult भी होता है, लेकिन ये कि with if you have a good history and you've taken histology and imaging, then you will be able to diagnose TB versus Crohn's disease. Endoscopically, this is how we see it. तो हमारे पास स्कोरिंग सिस्टम होता है, मेयो स्कोरिंग सिस्टम होता है फॉर अल्सरेटिव कोलाइटिस, यूसी EIS होता है इसके क्रोन्स के लिए, एंड वी सी द डिफरेंट टाइप ऑफ अल्सर्स। ऑब्वियसली इट डजंट हेल्प, आपको तो हेल्प नहीं करता एज अ जनरल प्रैक्टिशनर कि अगर हम स्कोरिंग करें, बट इट हेल्प्स द गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट टू से कि पहले जो है वो अल्सरेटिव कोलाइटिस था तो उसको मेयो स्कोर 2 था, अब जो है ट्रीटमेंट के साथ मेयो स्कोर 0 हो गया, तो इट जस्ट हेल्प्स अस टू फिगर आउट कि म्यूकोसल हीलिंग हो रही है कि नहीं हो रही। Histology, I'm not going to go very deep into histology, but मेन जो बड़ी मोटी चीज़ें हैं वो दिस इज कि अल्सरेटिव कोलाइटिस ऑब्वियसली एज वी सेड म्यूकोसल इन्फ्लेमेशन होती है, क्रोन्स में पैची ट्रांसमिशन होती है, दूसरी क्रिप्ट एब्सेसिस कॉमन होते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस में जो कि फ्यू होते हैं क्रोन्स डिजीज में। फिर हम देखते हैं ग्रैनुलोमास एब्सेंट होते हैं, इसमें जो है ग्रैनुलोमास क्रोन्स डिजीज में जो है वो पॉजिटिव होते हैं। तो ये 2-3 मोटी चीज़ें होती हैं जो कि हमें डिफरेंशिएट कराती हैं कि अल्सरेटिव कोलाइटिस है या क्रोन्स डिजीज है। एंड ऑब्वियसली हमारे जो हिस्टोपैथोलॉजिस्ट हैं वो दे कैन आल्सो, इफ यू डिस्कस इट विद देम, दे कैन आल्सो डिफरेंशिएट बिटवीन अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड क्रोन्स डिजीज। द ओनली थिंग इज कि हमारे अगर आप उनको बताएं कि जी हम ये सस्पेक्ट कर रहे हैं तो ही वो सही तरह आपको रिपोर्ट करके देंगे, लेकिन अगर हम उनको इंफॉर्मेशन, क्लिनिकल इंफॉर्मेशन नहीं देंगे और जस्ट क्रॉनिक डायरिया लिखेंगे तो ऑब्वियसली दे डोंट नो एनी हिस्ट्री, तो दे डोंट नो कि आपके जो कंसल्टेंट है उसके दिमाग में क्या चल रहा है कि ये क्या हो सकता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हिस्टोपैथोलॉजी वालों के लिए भी कि आप उनको एक्चुअल में हिस्ट्री प्रॉपर दें ताकि वो फिर एक प्रॉपर एनालाइज करके डायग्नोसिस बना सकें। और बहुत दफ़ा होता है कि उन्होंने हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट दी और आपको लगता है कि नहीं अभी भी IBD हो सकती है, you can always ring them up or and discuss it with them. This is again the same thing, तो Crohn's और ulcerative colitis में वही goblet cell script abscess, इसमें Crohn's में scanty होते हैं, इसमें common होते हैं, इसमें depleted होते हैं goblet cell। तो ये सारी basically histological features हैं जो कि if you see on a histopathology report it should give you a clue कि patient को जो है वो inflammatory bowel disease है। एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन जैसे हमने शुरू में देखा था, तो वही जॉइंट प्रॉब्लम्स, आपके स्पॉन्डल सैक्रोआइलाइटिस यूजुअली होता है, आई में यूवियाइटिस हो जाता है, रीनल स्टोन्स वगैरह होते हैं, कुछ पेशेंट्स एराथोमा नोडोजम से या पायोडर्मिया गैंग्रेनोसम के साथ प्रेजेंट करते हैं। इसी तरह कभी पेशेंट्स को एक्यूट और क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस भी हो जाता है। तो डिफरेंट एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशंस इसकी होती हैं। द की इज ऑब्वियसली टू टेक एवरीथिंग टुगेदर, टेक अ प्रॉपर हिस्ट्री एंड थिंक अबाउट इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज के दैट कैन बी वन ऑफ द कॉजेस। Skin manifestation I'm not going to go deeper into, but just to show you that there is a lot of skin diseases which can manifest as an extra intestinal manifestation of IBD, so we need to be mindful of that. What about management? तो management में obviously first thing is हमारे area में, हमारे region में कि we rule out other specific। दफ़ा
आपको अगर सस्पेक्ट है कि पेशेंट को इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है तो प्लीज़ पेशेंट को जो है स्पेशलिस्ट को रेफर करें ताकि वो ऑब्वियसली फर्दर ट्रीटमेंट मैनेजमेंट इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट हो सके. यूजुअली पेशेंट आर स्टार्टेड ऑन 5 ASAs, so mesalazine स्टार्ट करते हैं. Acute illness में we start patients on steroids, and then we have other medications like azathioprine, methotrexate, tofacitinib, and anti-TNF therapy like infliximab and adalimumab, and then obviously finally is surgery. So this just shows you जैसे mild symptoms patients को होते हैं तो they can usually be treated with topical steroid, ASAs and antibiotics if needed, and then as you go up in the pyramid, then moderate symptoms they usually need immunomodulators, or severe में जो है वो surgery or biologics. Different types of biologics available हैं, जैसे मैंने कहा infliximab, adalimumab, इसके अलावा एज़ोथायोप्रिन, साइक्लोस्पोरिन, मेथोट्रेक्सेट तो ये पाकिस्तान में अवेलेबल हैं. बुटासोनाइड आई थिंक इट्स नॉट रेडिली अवेलेबल. सम pharmacies can get it imported, but I don't think it's readily available. But usually we use delta cortilia prednisolone. Antibiotics, so obviously it is common, और दूसरा mesalazine and sulfasalazine is available as well. Side effects, aminosalicylates are usually anti-inflammatory, and they include mesalamine and sulfasalazine. Then corticosteroid is also obviously anti-inflammatory. We don't give it for a long term. जब acute inflammation को settle करने के लिए दिया जाता है और फिर tapering dose दिया जाता है. Immunomodulators obviously उन patients को इस्तेमाल होता है जिनको frequent episode हो रही हों, so that they are on a steroid sparing. Crohn's and IBD patients are prone to develop CMV infections, HSV infections या दूसरे infections हो सकते हैं, तो एंटीबायोटिक उसके लिए प्रिवेंशन के लिए दी जा सकती है. इसके अलावा फिस्टुलेटिंग डिजीज होती है, उसमें एंटीबायोटिक दी जाती है. एंड लास्टली बायोलॉजिकल थेरेपी जिसमें आ जाता है इन्फ्लिक्सिमैब, एडालिमुमैब, वेटुलुजिमैब और बाकी infliximab is readily available. Adalimumab is not available, and the rest of them are also not available freely. I think some people do get it imported from somewhere, but no, only infliximab. हमारे पास मैनेजमेंट के तो for Crohn's disease and inflammatory bowel disease, as we said, Crohn's disease में we don't try and go with 5 ASA. We usually go with steroid or फिर anti-TNF or azathioprine. Ulcerative colitis में we put them on 5 ASAs, rectal enemas, steroid enemas, and then we go for anti-TNF और फिर आगे जाके tofacitinib और बाकी medications. तो सिर्फ डिफरेंस ये है कि यूजुअली पेशेंट्स Crohn disease में पेशेंट्स आर नॉट यूजुअली ऑन mesalamine, but in ulcerative colitis that's one of the first medication that they are started on. Ethnic minority and obviously socio-economic deprivation is associated with worse surgical outcome, and as we all know that our region is one of the low socio-economic countries, so surgical outcome हमारे में भी इसी तरह ही होंगे. The only problem is कि हमारे पास patients जो हैं इतनी late present करते हैं कि उनकी जो complications हैं वो बढ़ जाती हैं. Role of antibiotic, यूजुअली जिसको भी डायरिया होता है सबसे पहले वो फ्लैजिल और सिप्रोफ्लॉक्सासिन की कोर्स कर देता है. तो देयर इज इन अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड Crohn's disease there was a Danish study which was presented actually this year, and they found that any antibiotic use was associated with 64% increase in developing ulcerative colitis and Crohn's disease, and the risk rose with each additional dose of antibiotic. और अगर आप देखेंगे हमारे यहाँ लोग सिर्फ ड्रॉप ऑफ अ हैट पे जो है वो बस थोड़ा सा कुछ हो गया तो वो एंटीबायोटिक शुरू कर देते हैं. तो we are sort of preparing ourselves to have a high number of ulcerative colitis and Crohn's disease.
Long-term complications. So long-term complications would be obviously malabsorption की वजह से malnutrition. Patients are anemic. They can develop perforation of the bowel. They can develop fistula and strictures. They can also develop the extraintestinal manifestations, and they are at increased risk of colonic cancer. So they need regular surveillance as well. यूजुअली मॉनिटरिंग में आपके पास अगर पेशेंट रेफर किया जाता है हॉस्पिटल सेटिंग से तो रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड इफ द पेशेंट इज ऑन इम्यूनोमॉड्यूलेटर या एंटी टीएनएफ पे हैं. फ्लेयर अप पेशेंट आपके पास प्रेजेंट करेगा विद अ फ्लेयर अप. Colorectal screening, as I said, is very important, and colonoscopy surveillance. So colonoscopy surveillance हर साल नहीं करनी होती. There is obviously a parameter के इतने साल के बाद patients की colonoscopy surveillance होनी चाहिए. Roughly, usually 5 years होता है, but it depends on what sort of disease it is and where it is and what sort of histopathology you found. What about lifestyle changes? As I said earlier, one of the epidemiology is that smoking increases inflammatory bowel disease occurrence. So avoid smoking cigarettes, adopt diets which are proven to work best in clinical trials. Depression and anxiety obviously makes IBD worse. Regular exercise, physical exercise should be in your routine to maintain normal body weight and muscle mass. And obviously obesity reduces the effectiveness of the drug. And avoid regular use of high dose NSAIDs. And as I said earlier, avoid irregular use of antibiotics. This is a very good slide. ये अभी recently एक talk में उन्होंने discuss किया था unmet needs in inflammatory bowel disease. Inflammatory bowel disease में बहुत सारे patients उनको लगता है कि हम orphan हैं, कि हमारे ना किसी को समझ में आ रहा है कि हमारी बीमारी क्या है और ना ही कोई हमारे पास कोई pathway है कि हम कहेंगे ये चीज़ें होंगी. तो obviously what internationally everybody has found that raising awareness, we need to raise awareness about IBD. We need to ensure there is an equity of care. We need to ensure there is we need to break the therapeutic ceiling. Obviously dietary strategies, fistula, strictures management. इसके अलावा रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ पेशेंट्स. कुछ पेशेंट्स को माइल्ड डिजीज होगी, कुछ पेशेंट्स को एग्रेसिव डिजीज होगी. एंड ऑब्वियसली रोड मैप पेशेंट्स को चाहिए कि पेशेंट्स को होता है कि हमें पता हो कि अगर हमें फ्लेयर अप होगा तो हमें कहाँ जाना है, किसके पास जाना है, क्या चीज़ें होंगी. तो दे जस्ट वांट रोड मैप के जो देयर इज समबडी देयर टू टेक केयर ऑफ अस इफ वी हैव इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज. Issues in Pakistan, obviously lack of awareness in general physicians, which is why we are doing this talk आप सबके लिए. इसके अलावा patients डॉक्टर शॉपिंग करते हैं, उनको एक जगह जाते हैं फिर दूसरी जगह चले जाते हैं different antibiotics वगैरह लेके, and then by the time they get the diagnosis of inflammatory bowel disease, it's already a few years down the line. Increased use of antibiotics, which is very common. Inflammatory bowel disease actually doesn't come to our mind. Usually infection आता है हमारे mind में. But as I said, if you take a proper history, it should be in one of your differential diagnosis. Obviously there is a confusion with tuberculosis. थोड़ा बहुत symptoms जैसे हमने earlier देखा कि Crohn's और TB के एक तरह के होते हैं, so there is a slight confusion, but again with a good history and proper investigation you can rule that out. Lack of IBD histopathologist, which ये बहुत common होता है कि आपने एंडोस्कोपी कोलोनोस्कोपी की और आपको लग रहा है कि ये बिल्कुल IBD ही है, हिस्ट्री भी उस तरह की है, एंड द हिस्टोपैथोलॉजी कम्स बैक एज नॉन स्पेसिफिक इन्फ्लेमेशन. तो जो हमारे हिस्टोपैथोलॉजिस्ट हैं ऑब्वियसली बिकॉज दे हैव नॉट सीन अ लॉट ऑफ इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, तो वो भी उनको भी थोड़ा सा डिस्कस करना पड़ता है कि भाई वी आर सस्पेक्टिंग इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, व्हाट डू यू थिंक. And most of the time if you discussed it and आपने उनको हिस्ट्री वगैरह बता दी तो they give you a hint कि either they suspect IBD or not.
प्रॉब्लम विद मेडिकेशन विच इज़ वेरी कॉमन, बहुत अनअवेलेबिलिटी और एक्सपेंसिव मेडिकेशन होती हैं। सिर्फ जैसे मैंने कहा हमारे पास इन्फ्लेक्सिमैब है, इसमें पिछले अगर मैं जाऊं तो एक टॉफासिटिनेब भी है जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है, तो वी कैन हैव दैट एज वेल। सो इन्फ्लेक्सिमैब एंड दैट, एंड ऑब्वियसली हमारे पास मेथोट्रेक्सेट है, हमारे पास एज़ोथाइप्रिन है और बाकी 5 ASAs हैं। There is no support group, which is why it's very important. जैसे साया वालों ने support group बनाया हुआ है, it's basically for everybody with inflammatory bowel disease, all the South Asian patients, and they have a very big them. I get a lot of questions so support group एक proper नहीं है, but we are there. एक सिर्फ एक बंदे की ट्रीटमेंट नहीं है कि जी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है, स्पेशलिस्ट ट्रीटमेंट, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट का भी रोल है, डाइटिशियन का भी रोल है, मेंटल हेल्थ वर्कर का भी रोल है, ऑब्वियसली एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशंस हो रही हैं तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट का भी रोल है, एंड मोर इम्पोर्टेंटली, सबसे इम्पोर्टेंटली प्राइमरी केयर का रोल है, क्योंकि सबसे पहले पेशेंट्स तो प्राइमरी केयर फिजिशियन के पास आएंगे, उसके बाद ही वो आगे जाके दूसरी स्पेशलिटी के पास रेफर होंगे। Last thing I would say is don't forget about the patient. Don't treat the numbers, treat the patient. A lot don't actually even ask. हम उसको सोचते ही नहीं हैं, हम सोचते हैं कि हाँ बस ये ले लो, बस अब तबीयत आपकी बेहतर हो जाएगी, मोशन कितने हुए, इवन फॉलो अप पे भी जब हम लेते हैं तो हम यही पूछते हैं मोशन कितने हो रहे हैं, स्टूल कैसा आ रहा है, ब्लीडिंग हो रही है कि नहीं हो रही, वेट कैसा है। वी नेवर आस्क अबाउट हाउ इज योर मेंटल हेल्थ, what do you think about your future. A lot of these patients, as we saw earlier in the studies, they are very depressed. So we need to think about the patient as a whole and not just a number. I would like to acknowledge SAIA and PARSA Trust for giving me this opportunity to present this first talk. I'm sure every monthly people will join for further talks. कुछ स्लाइड्स मैंने डॉक्टर विशाल शर्मा, डॉक्टर चार्ली लीस एंड मंडे नाइट IBD का ग्रेटफुल हूँ कि मैंने उनसे ली हुई हैं, जो कि मैंने आपको अभी प्रेजेंट की। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much, Shanil. Dr. Asad Chaudhry here, and it's always a pleasure to listen to you, and very informative talk. Today is a historic day. ये inflammatory bowel disease जो है एक बड़ा I would say neglected topic है, और अपनी clinics में हम day in and day out patients देख रहे हैं जो clinic to clinic move कर रहे हैं और with diarrhea, और वो ठीक नहीं हो रहे, लेकिन उनको आगे मूव नहीं किया जाता फर्दर इन्वेस्टिगेशंस के लिए। मेरे ख्याल में हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। लेट्स टेक सम क्वेश्चन। The most common clinical symptom for inflammatory bowel disease usually is patient presents with chronic diarrhea, or they would present with bleeding PR. So if they have a chronic diarrhea or bleeding PR, obviously then you would want to investigate them कि उनको क्यों हो रहा है। The second point will be you will take a history कि bleeding PR और chronic diarrhea अभी एक हफ्ते से है, 4 दिन से है, या ये 2-3 महीने से on and off हो रहा है, and that will give you a clue कि अगर 2-3 महीने से हो रहा है, on and off थोड़ा सही हो जाते हैं, फिर दोबारा हो जाता है, तो that will give you a clue कि patient को you should be thinking about inflammatory bowel disease. There is a role of diet. जब हम अपने उस पर टॉक पे आएंगे तो वो हमें थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में जाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम इज़ वही मैं आपसे जैसे कहूँगा कि वी आर इन अ लो सोशो इकोनॉमिक कंट्री, ठीक है, तो आस्किंग पेशेंट्स के ये भी नहीं खाओ, ये भी नहीं खाओ, ये भी नहीं खाओ, या ये खाओ, ये खाओ, ये खाओ, तो यू आर पुटिंग बेसिकली एन एक्स्ट्रा बर्डन ऑन देम। ज़्यादातर पेशेंट्स जो हैं वो मेडिकेशन भी अफोर्ड नहीं कर पाते, या उनके लिए मुश्किल होता है रेगुलर फॉलो अप कराना, तो you can give them a general guidance about diet,
but restricting some diet makes their disease worse. बहुत दफ़ा वो मेल नरिशमेंट के साथ आते हैं कि जी हमें तो बोला गया है कि कुछ भी नहीं खाओ, सिर्फ उबली हुई चीज़ें खाओ, तो ऑब्वियसली दैट डजंट हेल्प द पेशेंट, कि उनको वैसे ही इन्फ्लेमेशन है और फिर ऊपर से आपने हर चीज़ बंद कर दी है और कहा है कि सिर्फ उबली हुई चीज़ें खाएं. तो देयर इज़ अ रोल ऑफ डाइट इंटरनेशनली, देयर इज़, but we have to tailor the treatment of inflammatory bowel disease according to our own region, कि हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं उसके मुताबिक हम इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और क्या ट्रीटमेंट उनको दे सकते हैं. Usually, if they are not if they are still symptomatic, 4.5 gram, that means you need to start thinking about other medications. A very simple thing really is fecal calprotectin, जो कम्युनिटी में हम जीपीएस को यूके में भी ये बताते हैं कि ब्लड्स वुड बी नॉर्मल. आईबीएस इज एक्चुअली अ डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन. मैं हमेशा ट्रेनीज को भी वार्ड राउंड्स में ये कहता होता हूँ कि हमारा थ्रेशोल्ड ऑफ क्लेमिंग नॉट डायग्नोजिंग आईबीएस इज एक्चुअली very low. हमारी first intention doing some tests, stool as well as blood tests. I'm not asking everyone to have colonoscopy, and the blood tests are normal. Fecal calprotectin in a chronic diarrhea, then I think it to significant extent it excludes IBD, I think. जी, ASA यूजुअली अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए ज़्यादा सूटेबल होती हैं, क्रोन्स में इतनी ज़्यादा उसकी हेल्प नहीं होती. और सेकेंडली दे आर राइट, वी यूजुअली सी मोर पेशेंट्स विद अल्सरेटिव कोलाइटिस. इन माय प्रैक्टिस एज वेल वी हैव सीन मोर विद अल्सरेटिव कोलाइटिस दैन क्रोन्स डिजीज, but that is correct observation. Dr. Altaf, do you agree with this? Yes, I totally agree. In Pakistan, we see ulcerative colitis more commonly than Crohn's. The simple reason may be that we are not diagnosing enough Crohn's, and it is difficult to differentiate between tuberculosis and Crohn's. So, this may be one of the reasons, but I have no doubt that ulcerative colitis is certainly more common than Crohn's in Pakistan and in Southeast Asia. Thank you. जी, antibiotic, obviously if you use antibiotic where they are not indicated, then they would kill off all your good bacteria anyway. Probiotic IBD में जो है वो there is a role, but we will discuss it in the future. हमारे जो future talk है उसमें एक topic है IBD probiotic पे, तो it will be discussed definitely. No role in IBD. जी, डॉक्टर अल्ताफ, we will go towards you first as a course director. आपके कुछ comments लेने के लिए. Thank you very much. Thanks everyone for attending this opening session. This is just an overview. We are going to have a series of talks on each and every aspect of inflammatory bowel disease, from differential diagnosis to advanced management, surgical, nutritional, hospitalized patient, etc. So we'll cover all aspects one by one. Today was just an overview. So I would really encourage you to attend the sessions. We'll advertise them in advance so that you will know when the next session is and on what topic. Thank you, Shanil. You were not feeling well, but you still fulfilled your commitment and completed the talk. This is just the beginning. There will be a lot of questions, and we will try and answer them during the talk in the chat section, and also later on when you have a raised hand, or you can come into, you can request for a question, and we will let you in. So thank you, Shanil. Thank you everyone for attending. Dr. Asad, Mohammed Haseeb Khan, business manager, Genix Pharma, has joined as well. Can we have some comments from him? Assalamu alaikum. First of all, thank you very much for Dr. Shanil Kadir. He's presenting such a nice presentation, and in a very short time, elaborate overview of IBD. It's a good presentation. And thank you so much. Thanks, nice effort of Dr. Asad Chaudhry, SAIA and PARSA Trust regarding IBD.
ये as he said कि common topic है और इसकी need है इसकी awareness के हवाले से लोगों को educate करने के लिए, तो it's a very good thing। और ये start है अभी इस पूरे सेशन से, आई एम श्योर और मजीद जो है वो डॉक्टर्स इसमें ऐड होंगे और इससे बेनिफिट मिलेगा। तो जेनिक्स ने हमेशा पार्टिसिपेट किया है इन तरह की चीज़ों में और इंशाल्लाह फर्दर भी इसमें हम पार्टिसिपेट करेंगे। Once again, thank you very much and nice effort of Dr. Asad and SAIA and PARSA Trust. Thank you very much. In the future, we do encourage cases from the participants as well. So we would like that the participant to present their own cases, or if they are hesitant, we can also you can also request a case format for us, or we can also present from your side as well. This series is designed to have sessions once in a month. So keep joining us and be part of the IBD series in the future. We are grateful and thankful to all the participants who have joined us, along with our expert, Genix Pharma for the Unrestricted Educational Grant, our post-director, Professor Altaf Alam Sahab, Dr. Farooq, our international faculty member, Dr. Asad, and our team at PARSA Eco Pakistan.